Okay, so I am Ritesh. I look after the international department at Pratham, and I've just got a little bit of details about you, Sudiksha, which I would like to confirm first. Thereafter, whatever questions you have in your mind, you can go ahead and ask, and I will answer them as descriptively as possible. So I've been told that you are at Heritage Rohini, if I'm not wrong. No, I'm in Bharti Public School, You're in Pitampura. Bharti. I'm so sorry. चले जाओ. And you had a 85% in class 10th and 80% in class 11th, right? No, I think you have someone else's Yeah. details. Okay, so please go ahead. What were your scores in class 10th and 11th? In class 10th, I scored 94%. Hmm. And then in class 11th, I scored 78%. And you have PCM with you, is that correct? Yeah. So that is the detail that I had. And now, whatever questions you have in your mind, please go ahead. Nothing. I just wanted to know about what all things you need to do if you want to go abroad for college. So if you're looking Which at, are the good and which are the good universities also, sir? Because we are actually totally nil about this kind of information. so let me start with the basics. First thing is that, when you have to look to go abroad, you need to decide about the countries first. Okay? Now, there has to be some objectives behind going abroad. One could be that I am looking for the best possible education. That is number one. Number two could be that I am looking at a country that gives me the best education, plus allows me to settle in that country. And number three could be that I want the best education, plus I want job opportunities so that I can work for at least 2, 3 years and then probably I can come back to my own country or go to another country. So out of the three, does anything matches your set of thinking? Yeah, I think the second one. You would like to settle down. Yeah. I think the third one should be fine with us. So what we can do is we can keep an option which is open to both the cases. Okay. So as you are a science student, so countries like United States, countries like Canada, both of them will have ample opportunities for you as a person. United States visa policy allows you to stay back, okay, for a period of 3 years, and Canada's policy allows you to stay back for a period of 2 to 3 years also. Okay. So again, another factor while judging country is also the budget, okay, the cost involved. So if you look at How do we? yeah, so if you look at the cost associated, so Diksha, all right, we're all fine. So the cost is pretty important, and United States the cost is very heavy. So we are looking at a 4-year cost, which includes your, uh, your accommodation, fooding, as well as your tuition, all added. It will be somewhere around 2.5 crores to 3.5 crores. It is that kind of an expensive event. If you look at Canada, a good university, something like University of Toronto or University of Waterloo or University of British Columbia, the top three, you're looking at a cost which is around about, say, 1.5 crores for a period of 4 years inclusively. And now if you want something which is lower in cost, probably, and at least gives you 1 year of job search visa where you can look for jobs in that country after completion of your course, that could be a beautiful country in Europe called Netherlands. So Netherlands, your total cost would be somewhere around, say, 90 lakhs to 1.2 crores at max. And they will give you a job search visa, which is for 1 long year, and that is valid for the entire European Union. So you might study at Netherlands, and you might go and work in Switzerland, or you might go and work in Denmark. Okay? So that is an absolute possibility. Also, a country like Australia, today a lot of people are demanding for it. Why? Because the Australian government is giving us
a post-study job search visa, which is for 4 to 5 years. And there is a tremendous job market thriving for foreign nationals as well in Australia. So if you're looking at the cost in Australia, it would be around about 1.25 crores for a period of 3 years at max. Okay? So this is how we stand. Okay? So anything between 90 lakhs to say 2.5 crores is kind of budget. So ma'am, as you are here, in fact, if I'm not wrong, sir is also here, right? Sir is at home, but is not sitting with us actually Achha, at right no now. worries, no worries, no worries. And Might I be can busy. call him. No, not a I big mean, if deal. you I can. want to, that would be great. I mean, then we can reach some Yeah, I would conclusions. like to. I would just ask him. Call Papa. Pull the chair. Hello, sir. Hi, sir. So we were trying to, discuss and finalize a few things here. I mean, finalize तो अभी बहुत दूर की बात है, but we were just giving you some information. So we were talking about the cost of studying in each of the countries, and I gave out a sort of a list of countries where she can go and the cost associated to it. I'll just repeat it for you. So United States, in case we go for a engineering course, which might be computer science or any other engineering course, there are more than 4,500 universities in the United States. They offer the best ranked universities in the world and probably the highest amount of scholarships in the world. But cost is very high. Okay? So the cost would be around about 2.5 crores to 3.5 crores for a period of 4 years, inclusive of your living and your tuition, which means conveyance, medical, insurance, etc., all covered. So that is how the cost is. And the US government allows the student to stay back for a period of 3 years after completion of the course. That those 3 years are given to you in order to look for jobs. Every country has a post-study job search visa policy. And according to that, Canada will give you a 3-year job search visa policy. Australia will give you a 4 to 5 year. Europe will give you 1 year. UK will give you 2 years. So that is how the job search policy is. Cost-wise, Canada would be 1.5 crores almost. Australia is 1 crore to 1.25 crores. Netherlands, a country in Europe that speaks fluent English and all the courses are in English, would cost you around about, say, 1 crore at max. Okay. And UK will, obviously cost you between 1 crore to 1.35 crore for a period of 3 years. So this is how the abroad opportunities are. Okay. In case you would like to know about any other country or if you have any other questions, I think we can go ahead. But ma'am, as we started with deciding about countries, these are parameters. In terms of job opportunities, the best positioning is United States for engineers. Then comes Canada. Then comes Australia. Okay, these are the top 3 countries. Netherlands is not too far away. The cost is pretty low. The job opportunities are pretty good in areas like artificial intelligence, cyber security, these kind of areas. They're doing extremely well. Okay. UK is not very well known for engineering courses per se. Okay. So that is how the situation is. Anything else that you would like to? But Canada, somebody told me it's around 50 lakhs. Sir, that is with colleges or probably with low range universities. So Okay. if I send you to somewhere like a Brock University or say a University of Regina, where the annual tuition fee is around about 15 lakhs. So your total 4-year course duration fee would be 60 lakh rupees. Add to that another 24 lakhs of your living cost. So that will be around about 80 lakhs, 80, 85 lakhs, not below that. If you're looking लिविंग at, जो है वो कैंपस में ही होता है. sir, first year mandatory है. Okay. उसके बाद स्टूडेंट पे डिपेंड करता है, पर ज्यादा अच्छा रहता है कि आप कैंपस पे ही रहें क्योंकि खर्चा थोड़ा कम हो जाता है. ठीक है. तो 50 लाख वाला जो कनाडा वाला हिसाब है ना, वो उनके कॉलेजेस में यहाँ पे डिप्लोमा मिलता है, डिग्री नहीं मिलती.
तो वो डिप्लोमा का आप क्या करेंगे? I mean, in case you want to go to US later on, you want to come back to India, it is not valid. So there's no point. There's no point. So degree courses of 3 years, नहीं sir, Canada and US में degree courses are for 4 years, 4 years, like in India. like in India. If you do a BTech, if you do a BSc in India, it is for 3 years. Yes. लेकिन वहाँ पे BSc भी 4 years है. Okay. And And Sudiksha? any other European country? Well, there is this beautiful country, Belgium. So Okay. Belgium has this university called KU Leuven, Leuven. So KU Leuven is probably one of the most low-cost universities in the world, and it is ranked very high. So the cost of tuition would be 5-6 lakhs per year, not more than that. And the cost of living is around about 10 lakhs. So approximately you're looking at a cost of 60 lakhs if you're studying at Belgium. So that is there. Then probably you might look at Singapore, you might look at Hong Kong, these kind of countries also. But Hong Kong's political situation is not great. I hope you know that. And then Singapore does not give you much of job opportunities, and it is pretty tough to crack through the Singaporean universities. They take around about say 15, 16 students every year, not more than that. That is how it is. But Canada and Bharti seem to have a relationship. So I've been dealing with Bharti for almost 8-10 years now, and I see a lot of students from Bharti landing up in Canada. Right from the first case that I dealt in 2012, I believe. Yeah, 2012 was the first case that I dealt, and that was for Canada. From there onwards, every year we get at least 2 to 3 people landing up in Canada itself. so what's your good name? Ritesh, I am Ritesh Jain. Okay, thank you. This is one thing about the universities, but all the universities are offering all the kind of like engineering courses or something related to those science courses. All kind of courses are available in all the universities. Most of them offer all kind of courses that you've heard of, and many offer courses which we may not have heard. For example, if you're looking at mechatronics, or for example, if you're looking at robotics, or looking at studying physics with mathematics, or any other sort of a program that you can think of, or data sciences for that matter. Okay. Data science. So all of that is available across the world. सर ये यूनिवर्सिटीज हैं, इसमें सब में स्ट्रीम सेम है या कुछ उसके लिए भी अलग अलग उसमें कैटेगरीज बनी हुई हैं भाई, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स में या केमिकल इंजीनियरिंग में, ऑटोमोबाइल एंड सर जैसे इंडिया में होता है ना सर, कि पहला साल कॉमन होता है, यहाँ पर फिजिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स सब कुछ पढ़ते हैं, और सेकेंड ईयर से आपको अपने मेजर में जाना है। यस, तो वैसे ही बाहर की यूनिवर्सिटीज भी, और उसमें सभी तरह की कैटेगराइजेशन, जैसे कि कंप्यूटर साइंस हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन हो गया, मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो गया, इसके अलावा भी जैसे एनवायरमेंटल साइंस इंजीनियरिंग है, फिर लेट्स से डेटा साइंसेस है, फिर से एडमिशन तो पहले ही ले लेते हैं ना सर। हाँ हाँ, ऐसा तो नहीं है कि सेकंड ईयर में होता है, वहां भी यहाँ नहीं तो नहीं फर्स्ट नहीं ईयर में डिसाइड हो जाता है। हाँ, वहां पर ये एक डिफरेंस है। यूनाइटेड स्टेट्स में कुछ प्रोग्राम्स और कुछ यूनिवर्सिटीज हैं जो एक प्रोग्राम ऑफर करती है जिसका नाम है अनडिसाइडेड मेजर। अनडिसाइडेड मेजर का मतलब होता है कि पहला साल तो बाकी सब इंजीनियर्स के साथ आपका कॉमन है, लेकिन आपने पहले साल में ये डिसाइड करना है कि आपने पढ़ना क्या है। तो आप पहले से डिसाइडेड नहीं जाते हैं, बल्कि वो साल वहां बिताकर फिर आप डिसाइड करते हो कि मुझे ये सब्जेक्ट ज्यादा अच्छे लग रहे हैं, तो इसका कॉम्बिनेशन बनता है ये इलेक्टिव। तो मैं बट फर्स्ट ईयर में तो कॉमन ही होते हैं ना सब्जेक्ट सर। फर्स्ट ईयर कॉमन होता है, लेकिन तो जो 12th के बाद पोजीशन है वही उसके बाद आएगी, फर्स्ट ईयर के बाद भी सेम है। हाँ, लेकिन फर्स्ट ईयर में आपने सारे सब्जेक्ट्स एक्सप्लोर कर लिए ना सर, कम से कम आपको समझ में आ जाता है मुझे किस तरह के सब्जेक्ट्स पढ़ने में मजा आ रहा है, राइट। लेट्स से मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स वाले एरियाज में गैजेट्स बनाने में या चिप्स के साथ काम करने में ज्यादा मजा आ रहा है बजाय कंप्यूटर साइंस के, तो ऑब्वियसली आई विल रिफ्रेन फ्रॉम टेकिंग कंप्यूटर साइंसेस एंड आई मेजरली टेक इलेक्ट्रॉनिक्स। और ऐसा भी हो सकता है कि मुझे रोबोट्स के साथ काम करने में ज्यादा मजा आ रहा है,
कंप्यूटर साइंस के साथ काम करने में मजा नहीं आ रहा है, सर्किट बनाने में मजा नहीं आ रहा है, तो प्रॉब्ली आई शिफ्ट टुवर्ड्स मेकाट्रॉनिक्स। तो ऐसा भी हो सकता है, वो प्रोबेबिलिटीज खुली रहती है। और बाहर एक चीज और भी होती है, जैसे आपने पहले से डिसाइड कर लिया है let's say, कि आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ेंगे, पहले साल के बाद आपका मन कर रहा है कि नहीं मुझे मैकेनिकल नहीं पढ़ना है, मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ना है, तो आप अपना चेंज भी कर सकते हैं। सो इट्स प्रीटी लिबरल, वहां पर काफी लिबरल होता है चीज़। और कोई सवाल आप लोगों का? Academic related we shall come forward to now. These are all basic information about the places. So हम्म। academy related actually, what would be your suggestion to go for at this point of time? What are the big and I mean what are the good courses one should opt for at this point of time when you are aware of a result also, and maybe you are aware of the current kind of requirements? So ma'am, across the world, obviously, computer science at the moment is the most desirable, section. Yeah. But if you're looking at future, then probably data Yeah. science is one of the major criterions that people are looking at. Electronics and communication comes second, okay, because of the communication devices, wireless communication, and so on and so forth. So these are the three main areas. But mechanical also is gaining a lot of momentum now, because बहुत सारे बच्चे क्या कर रहे हैं कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग ग्रेजुएशन में पढ़ रहे हैं और फिर मेकाट्रॉनिक्स पढ़कर रोबोटिक्स में जा रहे हैं पोस्ट ग्रेजुएशन। Okay. बस कमर्शियल एंड डोमेस्टिक दोनों तरफ के रोबोट्स बनाए जा रहे हैं बहुत क्वांटिटी में इस वक्त। अगर आपको पता हो, फ्लिपकार्ट पे इस वक्त पोछा लगाने वाला रोबोट भी मिल रहा है, विच इज जस्ट द स्टार्टिंग। और ऐसे ही आप देखेंगे कि धीरे धीरे करके डोमेस्टिक फ्रंट पे जहां जहां इंसान का टाइम वेस्ट होता है, एनर्जी वेस्ट होता है, उन जगहों को रोबोट्स रिप्लेस करेंगे। इनफैक्ट मेडिकल एरियाज में भी रोबोटिक सर्जरी हो रही है। सो बीच में डिफेंस में भी रोबोट्स का यूज करने की बात हो रही है। इंडियन गवर्नमेंट ने हालांकि उसको डिसअलाउ कर दिया है, बट बाकी कंट्रीज अभी तक उस पर काम कर रही है। So there is a lot of momentum about robotics also. A girl can go to mechanic lines. Yeah, so actually you can start with mechanical and then probably shift into robotics in your masters. और robotics में जाने के लिए जरूरी नहीं है कि मैकेनिकल से ही आना है, आप इलेक्ट्रॉनिक से भी आ सकते हो, क्योंकि सर्किटिंग बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज होता है उसमें। और आप कंप्यूटर साइंस से भी आ सकते हो, क्योंकि ऑल आर्टिफिशियल आई मीन ऑल रोबोट्स विल बी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंडेक्टेड, राइट? सो वो एम्बेडेड होंगे सारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो हमको वहां उस एंगल से भी हमको आने को मिल सकता है। दैट इज हाउ इट इज। Any But question? Sudiksha, what are you most interested in terms of engineering, if it is Computer science. computer science? So you have computer science with you as a subject in school? Yeah. Because देखो, अगर यूएस सोचोगे अप्लाई करने का और कंप्यूटर साइंस अप्लाई करोगे उधर, तो आपके पास सब्जेक्ट होना बहुत जरूरी है कंप्यूटर साइंस, और उसमें मार्क्स क्या है वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो अभी स्कूल में तो पाइथन सीख रहे होंगे आप, Yeah. तो पाइथन लेवल 1 किया है या लेवल 2 किया है? अभी तो level 1. थोड़ा जल्दी आपको लेवल 2 कर लेना चाहिए, बिकॉज अगर आप बाहर की यूनिवर्सिटीज में अप्लाई कर रहे हैं ना, तो वो सिर्फ आपके मार्क्स नहीं देखते, वो मार्क्स के अलावा और भी बहुत सारी चीजें देखते हैं, जैसे कि आपके एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, आपके ओलंपियाड्स के स्कोर्स हैं, फिर आपका इंग्लिश लैंग्वेज स्कोर है, फिर आपके सोशल वर्क में कुछ अगर आपने कर रखा है कंसिस्टेंट, नॉट वन टाइम, एक बार संडे को गए करके आ गए या एक बार समर्स को गए करके आ गए, नॉट दैट, कंसिस्टेंट वर्किंग अगर हमने की है, तो दैट विल बी कंसिडर्ड एंड दे आर प्रीटी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले मार्क्स देखते हैं, मार्क्स का क्राइटेरिया जैसे ही सेटिस्फाई हो जाता है, फिर वो सेकंड लेवल देखते हैं, ये सारी चीजें, फिर उसमें देखते हैं कि आप बाकी बच्चों से कितना अलग है। तो वो कोशिश कर रहे हैं कि हर वो बच्चा लेकर आए जो बाकी अप्लाई जो बच्चे कर रहे हैं उनसे अलग हो, ताकि जितने बच्चे वहां पहुंचे वो सब एक दूसरे से अलग हों और सब एक दूसरे से कुछ ना कुछ सीख पाए। दैट इज द एंटायर आइडिया। एनीथिंग एल्स दैट यू वुड लाइक? इतना फंड्स कैसे अरेंज होते हैं सर? सॉरी, ये फंड्स कैसे अरेंज होगा इतना?
सर फंड्स तो देखिए आप लोगों को देखना पड़ेगा, दो तरीके हैं। एक तो आप लोन ले सकते हो और दूसरा ये कर सकते हो कि अपने आप अरेंज कर सकते हो व्हाटसोएवर। और जो फंड्स का शोकेसिंग होता है वो अलग अलग कंट्री में अलग अलग ड्यूरेशन का होता है। अगर आप कैसे? यूनाइटेड स्टेट्स जाना चाहेंगे तो 6 महीने तक, 1 साल का जो खर्चा है इनका, वो आपको 1, 2 या 3 बैंक अकाउंट्स में आप उसे डिवाइड करके भी रख सकते हैं, या अपने फिक्स डिपॉजिट से भी उस अमाउंट को आप दिखा सकते हैं। अपने घर में अन्य मेंबरों से भी आप पैसा ले सकते हैं, या उनके बैंक अकाउंट में जो पैसा है वो पैसा भी आप दिखा सकते हैं। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि सारा फंड ही आपके पास हो। ऑब्वियसली वाइट्स में इतना पैसा होना इज नॉट पॉसिबल इन इंडिया। तो आप अदर अरेंजमेंट्स भी कर सकते हो, स्पॉन्सर्स का अरेंजमेंट भी कर सकते हैं, एवरीथिंग है। और एजुकेशन लोन किस बेस पे मिलता है? सर उसमें तो कोलैटरल लगेगा। अच्छा, और नहीं तो एक कंपनी है प्रोडिजी फाइनेंस, आप उससे लोन ले सकते हो, लेकिन उस पर काफी हायर इंटरेस्ट रेट होता है, लेकिन वहां कोलैटरल नहीं लगता। कितना होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट? सर 13 से 15% जो मैंने लास्ट सुना। ओके। Which are the good universities in US, sir? For That list is CS point. that list is quite No, the top one or the best three, four. At least बेस्ट you 10? can. बेस्ट 10 भी नहीं हो पाएगा सुदीक्षा का। ओके। नहीं हो पाएगा. नहीं हो पाएगा। Reason फ्रैंकली being. स्पीकिंग, जो वहां की टॉप यूनिवर्सिटी Hmm. में करीबन आप समझ लीजिए 4,500 यूनिवर्सिटीज में से कोई 250 यूनिवर्सिटीज होंगी जो वर्ल्ड रैंकिंग में टॉप 200 में आती Okay. है। तो ये जो 200 में आने वाली यूनिवर्सिटीज है ना, इनका मुकाबला आप करवा लीजिए हमारे आईआईटी से। तो आईआईटीज में हमारे पास सिर्फ 3 आईआईटीज हैं जो टॉप 200 में आती है, राइट। उनके पास आप सोचिए 200 इंस्टीट्यूशंस होंगी जो टॉप 200। तो उन इंस्टीट्यूशंस में हर एक इंस्टीट्यूशन में 80,000 से लेकर के 40,000 तक लोग अप्लाई करते हैं। और एक यूनिवर्सिटी में मुश्किल से किसी कोर्स में 100 सीट होती है, तो किसी कोर्स में 400 सीट होती है। तो ऐसे करके सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन, तो कंपटीशन बहुत सीवियर है। ओके, तो आपको जब यूनिवर्सिटी प्लान करना होता है ना, तो आपको ये देखना होता है कि मेरा ओवरऑल एवरेज परसेंटेज कितना निकल कर आ रहा है, और लास्ट ईयर जिस यूनिवर्सिटी में मैं अप्लाई कर रहा हूँ वहां लास्ट ईयर किस एवरेज पे लिया गया। लिया गया था एडमिशन. तो Correct. ये विद एक्सपीरियंस ही समझ में आता है, पहली बात। सेकेंडली, हम लोग जब प्रोफाइल्स दिखते हैं तो हमें समझ में आ जाता है कि ये एक्सेप्टेंस होगा कि नहीं होगा। तो हम क्या करते हैं, 3 कैटेगरी की यूनिवर्सिटीज देते हैं हम बच्चों को। एक होता है ड्रीम, जहां हम सब जाना चाहते हैं लेकिन Correct. बहुत मुश्किल होगा जाना। सेकेंड होता है रीच, जहां 50-50 चांस है। और थर्ड होता है सेफ, जहां मुझे पता है कि हो ही जाएगा। Okay. So what would be the safest for us? In safest US. would be safest would be probably Michigan State and Florida State University, or say Ohio State University. Ohio is the one. Yeah. Hmm. ओहायो स्टेट खर्चे में भी कम है। ये तीनों स्टेट यूनिवर्सिटीज खर्चे में कम है। देखिए अमेरिका में ना दो तरह की यूनिवर्सिटी होती है, एक होता है पब्लिक, एक होता है प्राइवेट। Yeah. आप देखोगे रैंकिंग में ज्यादा ऊंचे प्राइवेट वाले दिखेंगे, लेकिन उनकी फीस भयंकर हाई होगी। पब्लिक वाले रैंकिंग में उतने हाई नहीं दिखेंगे, लेकिन उनकी फीस बहुत कम होगी। ठीक है? और दूसरा, सरवाइव करना, स्टूडेंट, इंडियन स्टूडेंट के लिए जो पहली बार बाहर जा रहा है, सरवाइव करना भी आसान होता है पब्लिक यूनिवर्सिटी, क्योंकि वहां कंपटीशन थोड़ा सा कम है। नॉट ओनली फॉर एडमिशन, बट रेगुलर जो क्लासेस है, रेगुलर जो कंपटीशन उसको फेस करना होता है, वो इतना हार्ड नहीं होता है। काइंड ऑफ you can still face it, you can enjoy your time and still manage to do quite well in your life. So that is how it is. मेरे तो देखिए मास्टर्स के बच्चे भी जा रहे हैं, तो मास्टर्स के बच्चे भी हमसे ये कहते हैं कि सर अगर साल भर का भी है ना, तो 50 लाख से ज्यादा तो हम खर्च नहीं करेंगे, तो आप हमको पब्लिक यूनिवर्सिटी ही दिलाओ, प्राइवेट यूनिवर्सिटी तो नहीं हो पाएगा, राइट। बट द थिंग दैट वी मिस आउट इज दैट प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के पास ना बहुत फंड्स होते हैं, तो वो लोग ना स्कॉलरशिप्स बहुत अच्छा देते हैं। तो आप मिक्स ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक कर सकते हो, ऐसे करके आप अप्लाई कर सकते
How is So that possible? mix of private and public, यानी कि let's say हम 5 यूनिवर्सिटीज अप्लाई कर रहे हैं या 6 यूनिवर्सिटीज कर रहे हैं, तो आप 2 प्राइवेट कर लो, 4 पब्लिक कर लो. अगर But again, उन दो but प्राइवेट्स again में, the point of, sorry. ना इट्स ओके. सो प्राइवेट आप वो वाले करो जिनका पास्ट रिकॉर्ड ऑफ अवार्डिंग स्कॉलरशिप्स इज वेरी हाई. फॉर एग्जांपल ड्यूक यूनिवर्सिटी, ड्यूक के पास एक 100% स्कॉलरशिप का फैसिलिटी है, अप टू 100%, है ना. उसमें से हमको कितना मिल जाए, राइट. ऐसे ही देयर इज समथिंग कॉल्ड दिस वन, वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी एट सियाटल. उनके पास भी एक अप टू 100% स्कॉलरशिप का प्रोविजन है, तो उसमें भी हम देख सकते हैं. It's quite difficult. But what is now your role play in making a child capable to get to clear these competitive exams or whatever basic requirements are required to get admitted to a foreign university? One thing. And second question, do you suggest a child who should go out for an undergraduate course or ये क्वेश्चन only पहले क्यों नहीं after? किया आपने? ये क्वेश्चन सबसे पहले करना चाहिए था. Because she was actually from day one interested in for the undergraduation. So now because I am allowed to speak, so I thought I shall just check with you that. So, नहीं, देखिए मेरे हिसाब से ना ये गेम है अपॉर्चुनिटी का. actually, मैं ये नहीं कहता कि इंडिया बुरी कंट्री है. इंडिया बहुत अच्छी कंट्री है, कम खर्चे में पढ़ाई हो जाती है, ठीक है? लेकिन यहाँ जिस तरह का सीवियर कंपटीशन है वो इनह्यूमनली है, ठीक है? आप कहते हो 9 लाख बच्चा बैठेगा जॉइंट एंट्रेंस मेंस, उसमें से कोई 10,000 बच्चा आईआईटी जाएगा, राइट. बाकी 9,90,000 बच्चा में से कम 6 लाख बच्चा कुछ नहीं करेगा और वो फिर अगले साल टेस्ट देगा. इट इज अ sheer waste of energy. It is a sheer waste of the economy also. So मैं वेस्ट नहीं करना चाहता टाइम. मैं ठीक ठाक स्टूडेंट हूँ, मेरे घर पे थोड़ा बहुत बजट है, आई कैन प्रोबब्ली लुक एट इट. तो इन दैट केस आप इंडिया एंड अब्रॉड दोनों अप्लाई कर दो, और जहां पर आपको अच्छा यूनिवर्सिटी मिले जो कि एक अच्छा रिटर्न दे सके वो आप एक्सेप्ट करो. So we will remain with you till say June 2025, when you have to take a final call after receiving all the offers from various corners of the world. So right from preparing the child for the foreign universities in terms of the profile that is required, plus giving you guidelines in terms of the calendar, helping you prepare the documents, helping her write the essays, and editing is entirely on us. Filling up all the application forms, which are very, very complex in nature, is a duty for us. After receiving offers, helping you to decide about the offers is a job for us. And after deciding the offer, applying for the visa and guidance for the same is our job. Plus, helping you get a place in the hostel is also one of our role. So we do everything in that front. and what about the preparation for these Indian universities? If We we talk, don't deal with that. So we do not deal with any kind of coaching per se. okay, So for coaching, etc., you will have to look at an alternate process. However, it is a very difficult job to manage Indian entrances as well as abroad thing. okay, because So you'll have to prepare in such a way that your CBSC and your Indian entrances get prepared at one go, and you have at least 4 to 5 hours in your hand so that you can prepare for the abroad university. because at present we are open to anything but natural, because we would like to go for as many options as available. I And understand. because we don't know what can we grab and what we can't. Right, ma'am. Absolutely fine. But Absolutely. CBSE, does it matter today in today's day? Absolutely, ma'am. Absolutely. इंडिया में मैटर नहीं करेगा, but बाहर तो बहुत ज्यादा करेगा. And all your life, even if you're applying for your postgrad, your class 12th maths will matter. Because when we give this kind of suggestion to these kids, these people are like, Mama, it doesn't matter now so much.
because our emphasis from day one is that CBSE is our first preference. So don't avoid this thing. So now because you are guiding this, so maybe some effect comes. Absolutely. It should come because you never know how the world will shape up. And अगर सीबीएसई में अच्छा परफॉर्मेंस की वजह से वर्ल्ड के टॉप 100 में हम जा सकते हैं, then why not? That is the entire question, right? और दूसरी बात मैं आपको बता दूं, कई लोग कहते हैं कि पोस्ट ग्रेड में चले जाना इतना आसान नहीं होता। पोस्ट ग्रेड में सबसे ज्यादा कंपटीशन होता है। वी डील विद मोर देन 180 स्टूडेंट्स फॉर पोस्ट ग्रेड एवरी ईयर, एंड वी नो हाउ डिफिकल्ट इट इज। Okay, so It is that far more difficult to go in the post grad than in undergrad. okay, so that part was like taking care of that things and all that. But for the preparation of that, if we come on to that point, for तो the preparation प्रिपरेशन of तो those. देखिए, आपको ना कोई एक ऐसा सीबीएसई प्लस एंट्रेंस का कोचिंग का देखना पड़ेगा जहां पर इंडिया वाला टेकन केयर ऑफ हो जाए। और बाहर का जो कुछ है वो तो हम देख ही रहे हैं। सिर्फ बाहर के लिए अगर यूएस जाओगे तो आपको एसएटी का एग्जाम देना पड़ेगा। जो बच्चा जॉइंट के लिए प्रिपेयर कर रहा है उसके लिए एसएटी का मैथ्स जो वाला मैथ्स है। सिर्फ एसएटी का इंग्लिश जो है वो थोड़ा चैलेंजिंग है, उसके लिए थोड़ा सा प्रिपेयर करना है और कुछ। No, what about the preparation for those abroad universities and all that, which you are looking after? राइट। When do सो you start those courses and तो मैम उसमें ना कोर्सेज नहीं होते। जैसे वो लोग देखते हैं कि आपने एक्स्ट्रा करिकुलर में क्या किया, तो हम क्या करेंगे, जैसे इन्होंने पाइथन लेवल 1 किया हुआ है, तो हम इनके लिए कोई इंटर्नशिप ढूंढ के लाएंगे जो कि ऑनलाइन इंटर्नशिप होगा किसी मेजर कंपनी का, जैसे okay, जेपी मॉर्गन हो गया या डेलॉयट हो गया या माइक्रोसॉफ्ट हो गया। तो इनको एक प्रोजेक्ट मिलेगा, उसको टाइम ड्यूरेशन के अंदर उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना है। हालांकि ऐसा जरूरी नहीं है कि रोज 1 घंटा करना ही होगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप कभी आधा घंटा किया, कभी 10 मिनट किया, जब आपका खत्म हो गया आप सबमिट कर दो, आपको आपका सर्टिफिकेट मिल जाएगा। फिर लेट से okay, बहुत सारे ओलंपियाड्स हो रहे हैं अक्रॉस द वर्ल्ड, कहीं मैथ्स, कहीं फिजिक्स, कहीं कुछ। तो वो ओलंपियाड्स हम एक के बाद इनको भेजेंगे, और इनको जो जो ठीक लगे वो ओलंपियाड्स वो कर ले और कोशिश करे कि अच्छा रैंक आ जाए। दिस इज नंबर 2। नंबर 3, अगर लेट से हम कोई टेक्निकल प्रोजेक्ट पे काम कर पाए, नथिंग लाइक, ये 2 3 4 चीजें, बस थोड़ा सा सोशल वर्क, ये बहुत जरूरी है। बिकॉज दुनिया के ज्यादातर स्कॉलरशिप्स या तो आपके मार्क्स पे डिपेंडेंट है या फिर सोशल वर्क पे डिपेंडेंट है। true. तो ये 3 4 चीजें बस आपको करनी है, और हमारे पास वक्त ज्यादा है नहीं। हमारे पास वक्त सिर्फ और सिर्फ अगस्त के महीने तक है। बिकॉज अगर हम यूएस अप्लाई करेंगे तो हमारा पहला एप्लीकेशन विंडो खुलेगा अगस्त के महीने में इस साल, Okay, और क्लोज हो जाएगा जनवरी के महीने में अगले साल। तो एप्लीकेशन करने का मजा है अगस्त से लेके अक्टूबर 30 के बीच, अगर आप यूएस देख रहे हो। कनाडा वगैरह बाकी आप सब बाद में कर सकते हो, लेकिन अगर यूएस देख रहे हो तो अगस्त से अक्टूबर के बीच में अपनी ज्यादातर यूनिवर्सिटीज आपको अप्लाई कर देने चाहिए। अगर आप 5 यूनिवर्सिटी कर रहे हो तो कम से कम 3 की एप्लीकेशन जानी चाहिए अगस्त से अक्टूबर। आप सोचो, मेरे पास इस साल एक बच्चा था जीटी गोइन का, मॉडल टाउन से। अब ये वो वाला बच्चा है जिसके 95% से कम आज तक जिंदगी में कभी आए नहीं है, और 10th में बोर्ड टॉपर था, तो स्कूल में उसकी फोटो वोटो लगी हुई है, तो ही इज दैट काइंड ऑफ अ किड। हाँ, तो ओलंपियाड वगैरह बहुत कुछ उसने कर रखा था, रैंक 8 इंटरनेशनली ओलंपियाड में था उसके पास, एक ओलंपियाड में। तो हमने कोई 10 या 12 यूनिवर्सिटीज उसकी फैमिली के लिए हमने अप्लाई किया, उन्होंने बहुत हमें प्रीमियम पैसा दिया ये सब करने के लिए, बिकॉज हम 5 से ज्यादा करते नहीं, तो ऑलमोस्ट डबल पैसा दिया, हमने किया। सारी यूनिवर्सिटी का ऑफर आ गया। अब एक ऑफर उसमें आया न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी का, वो हमने किया था अगस्त 8 या 10 को हमने कर दिया था उसको अप्लाई। तो उसका ऑफर आ गया हमें जनवरी में, और जनवरी के बाद जितने भी ऑफर्स आए, न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी ने हमें रेस्ट्रिक्ट कर दिया, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो वो बोलते हैं कि आपने अर्ली बाइंडिंग में अप्लाई किया है हमें, आप हमें छोड़कर किसी और यूनिवर्सिटी को एक्सेप्ट कर ही नहीं सकते, और आपको बाकी सारी यूनिवर्सिटी से अपने डॉक्यूमेंट्स इमीडिएटली वापस लेने पड़े। तो हमें 3 महीने लगे सिर्फ डॉक्यूमेंट्स वापस लेने में बाकी सारे यूनिवर्सिटीज। So that is how complex this process is. So it's a US government binding. If you're applying a ED,
अर्ली डिसीजन में किसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं तो आपको डॉक्यूमेंट्स वापस लेने पड़ेंगे। अर्ली एक्शन में अप्लाई कर रहे हैं तो आप जितनी मर्जी यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करो, बस सिर्फ फायदा ये होगा कि आपको डिसीजन जल्दी मिलेगा। अब आप सोचो, आपको दिसंबर या जनवरी के महीने में आपके हाथ में कंफर्म्ड ऑफर और मार्च में आपका बोर्ड है, तो आप सोचो कितना सुकून है। Much better. तो ये पॉसिबिलिटी है यूएस के साथ। बाकी यूएस में आप लोगों को कोई रहता है अगर तो Any other question? Any other what, guidance from your side, sir? nothing much as of now. I would just request you to do a couple of things, Sudiksha. First thing is go on to this website called collegeboard.org. collegeboard.org, right? ORG, right. तो ये Okay. सैट का वेबसाइट है। यहाँ पर आपको जाके ना एक सैट डायग्नोस्टिक टेस्ट मिलेगा। Okay. बिना किसी प्रिपरेशन के ना ये टेस्ट दे देगा। Okay. और प्लीज मेरे को बताओ स्कोर कितना है, तब हमको पता लगेगा कि हमको सैट के लिए कोचिंग चाहिए या हम खुद प्रिपेयर कर सकते हैं। Okay. अगर आप 1250 यानी कि 1250 स्कोर कर सकते हो बिना किसी प्रिपरेशन के, आपको किसी कोचिंग की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारा टारगेट स्कोर जो है ना वो 1500 है आउट ऑफ 1600। तो हमको सिर्फ 250 पॉइंट ही चाहिए ना, वो अपने आप प्रिपरेशन से आ जाएगा, अपने सेल्फ प्रिपरेशन से आ जाएगा। This is फिर English आप and Maths related. इंग्लिश एंड मैथ्स, Okay. ठीक है ना। और अगर सेल्फ प्रिपरेशन से ये वाला टेस्ट निकल जाता है तो आपके पास बहुत सारा टाइम बचेगा जिसमें आप बहुत कुछ और कर सकते हो और अपने प्रोफाइल को एक्साइटिंग बना सकते हो। प्लस थोड़ा सा स्केड्यूल बना लीजिए अपने लिए कि आप कब क्या चीजें करते हो और कितना टाइम आपके पास खाली है। बिकॉज इफ यू डू नॉट नो कि मेरा कौन सा टाइम खाली है ना, तो आप एक्टिविटीज का लोड ले नहीं पाओगे। 5 घंटे आप मेरे को दे दो हफ्ते में, किसी भी हफ्ते में आप मेरे को 5 घंटे दे दो, आई टर्न द प्रोफाइल। और वो प्रोफाइल ना सिर्फ आज काम नहीं आएगा, जब आप इंजीनियरिंग खत्म कर रहे होंगे और जब आप प्लेसमेंट से बैठेंगे ना, तब भी आपके काम। And this practical project which you get from the companies for these profile enhancement and all that kind of stuff, do you think that is available to students otherwise also through school or through some other, no, or through other some contacts or something? कॉन्टैक्ट से मिल सकता है, अदरवाइज वो कॉन्टैक्ट्स होंगे किसके, कितने लोगों के पास? 10% लोगों के पास होगा, Very true, very true. बाकी लोगों के पास तो होगा नहीं। But some particular kind of projects you are supposed to do, or you can go for any project running in the company. There are certain specific projects that come on my platform, Okay. which are technical, Mm-hmm. and these projects we weigh them that कि बच्चा कर पाएगा या नहीं, and then we give it to them. हम कभी एक नहीं देते, हम 1 2 3 ऑप्शन दे देते हैं और फिर हम बच्चे को बोलते हैं कि आप देखो इसमें से किसमें आपको मजा आएगा, आप वो वाला करो। But these companies must also be knowing now which is suitable for these kind of people, like these school going people Ma'am, or undergrad they people. open a lot of projects which might be suitable to anybody and everyone, right? It is up to you to choose. उनको तो जो जो प्रोजेक्ट आया होता है जिसका काम उन्होंने करवाना है वो उन्होंने खोल दिया, अब कौन करेगा नहीं करेगा उससे उनको कोई मतलब नहीं। उनके लिए कोई एज बार नहीं है, कुछ नहीं है, जो चाहे करते उस प्रोजेक्ट को, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। But a single person single-handedly cannot handle a complete project. Then how does it happen? नहीं, It नहीं, must ma'am. be some group activity or some team activity. These are very simple projects. It is a part of a large massive project actually. Yeah, so a little bit of that Little bit basically of gets that. distributed to you people. Yes. Matlab you grab that thing and then you get asked Absolutely. this. So it could be a small research project, it could be a small coding project, okay? It could be either of the two, or it could be a mixture of the two also. Okay, fine. Right, sir. Okay, I'll go for this thing as you So suggested. And what you I'll can do is I'll just ask my colleague Anjali to send you an email stating the scope of my services, broad head wise कि हम लोग क्या क्या cater करते हैं, ताकि आपके पास एक open format में कुछ चीजें हो। And the pricing for the entire thing is 45,000 rupees for the profile, okay. and 60,000 rupees for the application process,
जिसमें आप 5 यूनिवर्सिटीज हमसे अप्लाई करा सकते हो किसी भी कंट्री। Fine. सो एक्सेप्ट फॉर इंडिया कोई भी जगह से आप 5 यूनिवर्सिटी ले सकते हो। लेट्स से आपने एक यूएस लिया, एक कनाडा लिया, एक यूके लिया, वी आर फाइन विद दैट। So overall is 1,05,000 rupees. This is payable in 2 installments, 50% upfront, 50% in the month of October. Okay. Sorry, month of September. Sorry, month of September. Okay, fine. Fine, sir. Thanks a ton for your knowledge sharing, sir. Most And welcome. just अच्छा, to, yeah. I'm so sorry, मैं बताना ही भूल गया कि ये होगा कैसे। ये सारा कुछ जो होगा, this will be online basis. You will not go anywhere, Sudiksha. Every meeting, every week will be held online and will be recorded just like this one and will be sent to your parents. I will align up one mentor for you who himself is an engineer, and there will be 2 psychologists who will be working along with you. Plus, there is a team of 3 people who will be working on your applications, and there will be 2 supervisors who will be looking after you. Okay? So there is a team of 8 people who will be working only on you per se. Okay? Obviously, they are looking at other students, but for you itself, there will be 8 people. So that is how it works. So everything is online. सिर्फ मंथ में एक मीटिंग आप लोगों को जो इनके मेंटर है उनके साथ आपको थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना है। ये समझना है कि वो इस महीने क्या कर चुके हैं, बच्चे का फीडबैक कैसा आ रहा है, एंड व्हाट इज द नेक्स्ट मंथ्स प्लान। ये आप हर महीने एक बार ही उनके साथ बैठ के थोड़ा सा समझ लीजिए। रेस्ट एक व्हाट्सएप ग्रुप होगा, उसमें आप लोग तीनों एडेड होंगे, मेरी पूरी टीम होगी, सारा कम्युनिकेशन उसी से फ्लो हो रहा होगा, ठीक है। एंड आई विल बी ओवरऑल सुपरवाइजिंग एंड स्ट्रेटेजाइजिंग फॉर द एंटायर थिंग। मंथ ऑफ जून में आप मेरे साथ बैठकर यूनिवर्सिटीज प्लान करेंगे। वो एक मीटिंग फिजिकल होगी, यहाँ पर आप लोगों को हमारे ऑफिस आना पड़ेगा, तो हम लोग यहाँ बैठ करके उसकी पूरी प्लानिंग कर लेंगे और फिर हम उसको एग्जीक्यूट करेंगे। Thank you so much for your time on a Saturday. I wish you Give all us some time to think about it, sir, and we'll give you the feedback on this thing absolutely, also, that whether we go for these things or we plan something else. Thank you. absolutely. Thanks a ton, sir. Thanks a ton. See you, sir.